ओके तो अच्छा मैंने लेट अस शेयर स्क्रीन और ओके तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट के क्वेश्चंस। फिजिकल केमिस्ट्री के नेक्स्ट के क्वेश्चन बाकी हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 1 से है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से है। 2 ही क्वेश्चन आए अभी तक और नेक्स्ट 2025 में क्वेश्चन आया। इसका मतलब कि चैप्टर 1 को भी अभी ये इम्पोर्टेंस मिल रही है, तो इसके भी क्वेश्चंस आप कर लेना। आईसेट में आपने देखा था कि ये जो आईसर का आईएटी है उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है इस चैप्टर से। तो क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज 1.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन द मास ऑफ 1.2 ml of the liquid in correct significant figures is। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि डेंसिटी इज mass by volume and mass is equal to density into volume. Now density is 1.81 और जो वॉल्यूम है दैट इज 1.2। अब आपको पता है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, बता सकते हो? रिजल्ट जो रिपोर्ट करोगे आप वो कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में करोगे? 2। तो इसका मतलब बी और सी ऑप्शंस तो आपने रिजेक्ट कर दी एज पर द रूल। ये एक 2.172 है, एक 2.17 है। बचे आपके पास 2 ऑप्शंस, एक है 2.2 और एक है 2.1। सो ऑब्वियसली जब आप इसको राउंड ऑफ कर रहे हो तो ये आंसर क्या आना चाहिए? 2.2। बट अगर आपको ऐसे नहीं करना है कि आपको लगता है कि भाई हो सकता है कि अलग हो, तो हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 वन सा 12, 2 आ गया, 12 एट सा 96 और प्लस 1 हो गया 97, यहाँ से 7 आ गया और जो 12 वन सा है 12 और 9 हो गया 21। तो ये रिजल्ट है 2.2172 और डेसिमल प्लेस देख लो 2.172, ये रिजल्ट है। अब एग्जैक्ट इसने लिखा है हमें रिपोर्ट करना है रिजल्ट इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो रिजल्ट है दैट इज रिपोर्टेड विद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहला जो ये वैल्यू है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, दूसरे में 2 है और हमें रिजल्ट अब रिपोर्ट करना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 2 को राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 2.17, बट वो भी उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 7 को वापस राउंड ऑफ करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2.2। तो ये हमारा आंसर, दैट्स इट। इतना सही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है to determine the exact amount of acetic acid in a sample. 1.5 gram of the sample is titrated against 0.5 normal solution of potassium hydroxide और टाइट्रेशन में हम यूज कर रहे हैं 30 ml ऑफ KOH। तो हमें बताना है कि परसेंटेज कंटेंट जो है वेट वाइज एसिटिक एसिड का वो सैंपल में कितना हो। तो हम क्या करते हैं कि जो 100% प्योर एसिटिक एसिड है उसका हम निकाल लेते हैं क्या, वेट। अब कैसे आएगा वो? आपके पास है 0.5 नॉर्मल KOH और कितना 30 ml जो कि यूज हो रहा है
30 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल KOH। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है ऑफ KOH required, that is equal to its normality into वॉल्यूम। पर ग्राम इक्विवेलेंट से मिली ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते हैं हम, है ना, क्योंकि वॉल्यूम है ml में। तो नॉर्मेलिटी है 0.5 और वॉल्यूम है 30, तो कितना हो गया ये 15। तो 15 मिली इक्विवेलेंट्स हैं KOH की। और आपको पता है जब भी टाइट्रेशन होती है, याद रखना, टाइट्रेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी रिएक्टेंट, मान लिया ऐसा है A moles of A plus B moles of B to give C moles of C and D moles of D। तो मोल तो डिफरेंट है, A B C D we don't know, बट जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे रिएक्टेंट A के, that is equal to number of equivalents of reactant B, that is equal to number of equivalents of reactant C, product C, and number of equivalents of product D। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा इक्वल होते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH that is equal to number of equivalents of acetic acid। ठीक है, तो इसका मतलब मिली इक्विवेलेंट्स का भी सेम फंडा होगा। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिटिक एसिड that is also equal to 15। अब इसका n फैक्टर 1 है ना, और अगर मैं इसके नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स की जगह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लिखूं तो कितने होंगे 15 इंटू 10⁻³ और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशन होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। बट एसिटिक एसिड का n फैक्टर कितना है 1। व्हाट इज n फैक्टर क्या होता है, हाँ, मतलब एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी, बेस के लिए उसकी एसिडिटी, है ना, रिडॉक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन लॉस्ट, है ना, ऐसा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड भी कितना होगा सेम। तो इससे वेट निकाल लो। तो इसका मतलब जो मास आएगा ऑफ एसिटिक एसिड रिक्वायर्ड इन द टाइट्रेशन, मतलब जो KOH यूज हो रहा है जिसके लिए, तो एसिटिक एसिड का ये मोल्स इनटू इट्स मोलर मास। एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है 60। कि देखो एसिटिक एसिड आपको पता है 2 कार्बन है 24, 2 ऑक्सीजन है 32 और 4 हाइड्रोजन है, ये आया 60। कितना हो गया 15 6 90। इसका मतलब 0.9 ग्राम जो है वो प्योर एसिटिक एसिड चाहिए। बट सैंपल कितना है, जो सैंपल है एसिटिक एसिड का उसका वो कितना यूज किया हमने 1.5, बट एक्चुअल जो एसिटिक एसिड है उसमें वो है 0.9। तो इसका मतलब जो परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड है उस सॉल्यूशन में, दैट इज एसिटिक एसिड का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, यस इट इज 60%। तो 60% जो है
दैट शुड बी द आंसर, मतलब सी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। कैसे किया समझ में आ गया? ऐसे अगर परसेंटेज प्योरिटी निकालनी हो ना तब भी सेम फंडा चलेगा। परसेंटेज कंटेंट ऑफ एसिटिक एसिड लिखो, इसको परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एसिटिक एसिड बोलो, सेम थिंग है ना। कि कितना वेट बाय वेट लिया ना बच्चे हमने। जैसे मान लिया कोई लिक्विड है ना, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आएगा। जैसे निकालते हैं ना परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इस तरह से वो बोल रहा है। जरूरत नहीं लिखने की, क्योंकि परसेंटेज बोले तो वेट ही होगा, अगर अलग होगा तो वो लिखेगा। हाँ जी बेटी बोलिए। यस बेटा, एक्चुअली वी हैव sample of acetic acid. Sample of acetic acid means in this sample, in addition to acetic acid, there may be some impurities. So that sample we weighted और इसका वेट था 1.5 ग्राम, और उस 1.5 ग्राम सैंपल के लिए जब हमने टाइट्रेट किया उसको against 0.5 normal solution of potassium hydroxide, and for this titration 30 ml solution of KOH is required, because it is an acid based titration। तो acid based titration मतलब कि उसका इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, एंड पॉइंट आ गया, पर यहाँ क्योंकि हम प्रैक्टिकल से नहीं कर रहे हैं इसको, इसलिए एंड पॉइंट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब है जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिटिक एसिड becomes equal to number of equivalents of potassium hydroxide। वो स्टेज जो है आने में जो QH रिक्वायर्ड था वो था 30 ml। ठीक है, तो अब हम इससे पता कर सकते हैं कि एक्चुअल वेट जो एसिटिक एसिड का उसमें कितना था। तो हमने कैसे शुरू किया कि इक्विवेलेंट्स जो है, मिली इक्विवेलेंट्स QH के, वो हमें पता थे। कैसे पता चले कि उसका आपको नॉर्मेलिटी दी हुई थी QH की, आपको वॉल्यूम दिया हुआ था QH। तो QH का नॉर्मेलिटी, QH का वॉल्यूम दोनों ही हमारे पास है। 0.5 नॉर्मल QH है और 30 ml सोल्यूशन है, तो 15 आपके पास मिली इक्विवेलेंट्स आए QH के, और जितने मिली इक्विवेलेंट्स QH के होंगे उतने ही मिली इक्विवेलेंट्स एसिटिक एसिड के जो है उसके अंदर होंगे। ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। आपने प्रैक्टिकली पढ़ा ना, ये N1V1 इक्वल टू N2V2, प्रैक्टिकल में किया होगा ना। दिस इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, कि जब भी डिफरेंट रिएक्टेंट से हम डील करते हैं वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। N1V1 क्या होता है, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ वन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ द अदर। और अगर सारे डिफरेंट A B C D हैं तो सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होंगे। और एक फॉर्मूला ये भी होता है, इसको हम मोलैरिटी इक्वेशन बोलते हैं, इसको नॉर्मेलिटी इक्वेशन बोलते हैं, इसको मोलैरिटी। इस इक्वेशन को कब यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं, एक तो दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन फॉर्मूला, मतलब सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन है जिसको कॉन्सेंट्रेटेड है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं हम, या फिर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनका एन फैक्टर पता है हमें कि वन सेम है, दोनों का एन फैक्टर क्या हो, सेम। जो दो डिफरेंट
हम सब्सटेंसेस ले रहे हैं इक्वल साइन के अपोजिट साइड वाले, एक x और एक y, तो उनके n फैक्टर सेम हो तो यूज कर सकते हैं हम m1 v1 इक्वल टू m2 v2। बट जब भी डिफरेंट आप कोई दो सब्सटेंसेस अलग अलग से डील करो तो हमेशा पहले वाला यूज करो, नॉर्मेलिटी इक्वेशन, दैट इज n1 v1 इक्वल टू n2 v2। तो हमने वही लगाया फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो KOH के जो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स हमें पता थे 15, पहले फाइंड आउट कर लिए, तो वो ही मिली इक्विवेलेंट्स किसके होंगे, एसिटिक एसिड के। और मिली इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट्स निकाल लिए, बस 1000 से डिवाइड ही करना था। और फिर मोल्स निकाल लिए, क्योंकि इक्विवेलेंट्स और मोल में क्या रिलेशन होता है, सिर्फ n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। और एसिटिक एसिड का n फैक्टर है 1। n फैक्टर मींस इट इज बेसिसिटी फॉर एन एसिड, कितने H प्लस देता है, दैट इज n फैक्टर। तो एसिटिक एसिड का मास निकालने के लिए यू नो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास ओवर मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स को हमने मोलर मास से उसके मल्टीप्लाई कर दिए, नंबर ऑफ मोल्स और उसका मोलर मास मल्टीप्लाई कर दिए, तो उससे आया कि 0.9 ग्राम है एक्चुअल 100% प्योर जो एसिटिक एसिड उसके अंदर है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो 0.9 है, बट सैंपल का वेट कितना है 1.5। इसका मतलब उसमें 0.9 ग्राम ही एसिटिक एसिड है, बाकी उसके साथ क्या है, इंप्योरिटीज है ना, या कोई और सब्सटेंसेस होंगे, है ना। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि कितना है, और टोटल 0.9 था एसिटिक एसिड और सैंपल था 1.5 ग्राम, तो 1.5 ग्राम सैंपल में सिर्फ 0.9 ग्राम जो है वो एक्चुअल में जो है वो एसिटिक एसिड है उसमें। तो हमें पता चला कि 60% एसिटिक एसिड है सिर्फ, कि अगर 100 ग्राम लेंगे हम सैंपल तो उसमें जो एसिटिक एसिड होगा वो 60 ग्राम ही होगा। समझ गए बच्चे, इतना सा है। परसेंटेज प्योरिटी भी हम ऐसे ही निकालते हैं। ओके, अब ये सिर्फ दो ही क्वेश्चन है जो चैप्टर 1 से थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के जो 2025 में जो क्वेश्चन आया है उस पे क्या हो रहा है, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर अ लिक्विड दैट इज कंसिडर्ड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा जी के लिए, जी इज इक्वल टू, पढ़ा है, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, है ना। और एच जो है दैट इज यू प्लस पीवी। तो ये अपने पास रिलेशन आ गया जिसमें प्रेशर की डिपेंडेंस और टेम्परेचर की डिपेंडेंस दोनों आ गए। इसका मतलब जब जब प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से जी क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, yes, when pressure increases g will increase, and when temperature increases g will decrease. Very good. So see, in all the options g is decreasing. If g is decreasing, that means temperature is increasing, because if pressure increases then g should increase. That means we can reject B and C options straight. B and C options are rejected. Why? Because when pressure is increasing, G is decreasing. On increasing pressure, G decreases. That's not true, because when pressure increases, G should increase. So B and C options are rejected.
We left with A and D. Now, when temperature increases, G decreases, and it decreases linearly because G and T power is 1. Power 1 means there is a linear relation, there is a straight line equation, that is y equal to mx plus c. Slope is negative, so minus mx plus c. That means u plus pb is c. M is entropy and T is the X. Now, there are two different pressures, P2 and P1. P2 and P1. And P2 is greater than P1. So tell me, when pressure is high, G is high, that means which straight line is at the upper edge? P2 or P1? P2. So there is only one option left, because in this case P1 is above P2. That's not true, because then P1 should be greater than P2, because if P is large, G is large. But here it is given as P2 is greater than P1. So at constant temperature, G increases. P increases, so G increases. So P2 is greater than P1. So option A is correct. Any doubt in it? Understood? Okay, great. So let's do next question. Okay. The question is, solubility of a solute in some solvent is assumed to be expressed using Arrhenius type equation, where activation energy is replaced by enthalpy of solution. Activation energy means EA is equivalent to delta H, right? And Arrhenius constant is replaced by solubility at a infinite dilution. Okay. Now, EA is equivalent to delta H and solubility, Arrhenius constant A is equivalent to solubility at infinite dilution. Let us write it like this. अब ये हो रहा है, in a solubility study of two solutes, we have X and Y, two solutes in the same solvent. It is found that when temperature keeping the other conditions unchanged, means there is no change in delta H, there is no change in S infinity, only temperature is changing from T1 to T2. And then when it changes from T1 to T2, solubility of X increases by a factor of 3. That means solubility of X at T2 divided by solubility of X at T1, that is equal to 3. And that of Y increases by a factor of 2. That means solubility of Y at temperature T2, solubility of Y at temperature T1, that is equal to 2. Solubility of X
at temperature T2 divided by solubility of X at temperature T1, that is equal to 3, and solubility of Y at temperature T2 divided by solubility of Y at temperature T1, that is equal to 2. So ratio of enthalpy of solution of X to that of Y we have to calculate. That means delta H of X divided by delta H of Y, that we have to calculate. ये क्वेश्चन है अपने पास. अब आपको पता है according to Arrhenius equation, extended form of Arrhenius equation, let us write. What is that? Log of K2 by K1 is equal to A upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2, right? Yes. So now log of X Sx2 divided by Sx1 is equal to delta H upon 2.303 R delta H X 1 upon T1 minus 1 upon T2. Same log of Syt2 upon Sy1 is equal to delta Hy upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. Right? So this is delta H X, this is delta H Y. Just divide it. You know, when we divide delta H X upon delta H Y, you know, all the other things are same, so they are cancelled out. So we left with log of Sx2 by Sx1 upon log of Sy2 Sy1, and you know this is log of 3 divided by log of 2. That's it. Or if this is not 2.303, just keep it here. It is natural log of 3 to natural log of 2. So log is not given, but natural log of 3 divided by natural log of 2, that is just देखो सेम फंडा है कि होता है कि आरएनएस इक्वेशन को ही यूज करना है, बट उसमें जो रेट कांस्टेंट है दैट इज सॉल्युबिलिटी, एंड ये जो आरएनएस कांस्टेंट है दैट इज एस इंफिनिटी और E minus delta H by RT. And at two different temperatures it is given, solubility is at two different temperatures. So K2 and K1 they are replaced by S1 and S2 for X and Y. Understood? Okay. Yes. Question is, consider n moles of an ideal gas undergoing a cyclic process starting from X. At X we have P1, V1 and T1. X to Y, P2, V2
T2 to Z, that is P3, V3 and T3, and again to X, that is P1, V1, T1, that is whole cycle. We go from X to Y, Y to Z, and Z to X. So in cyclic process, all the state functions values are same, because from initial stage to final stage, if both are same, all the state functions have same value, right? But here what is given, let us see. The work done in the process Y to Z is 0. Is it true? No, because come again. B will be the correct answer. Okay, let us see. Work done from X to Y first. Sorry, Y to Z. Okay, Y to Z. So temperature is increasing. That means temperature T3 is greater than T2. And what about pressure? Pressure is also increasing. P3 is greater than P2. Temperature and pressure both are increasing. That means pressure is directly proportional to temperature. Okay. It is not an isothermal process first. Okay. Ab work done X to Y, that is isothermal. Yes, X to Y it is isothermal. So when you go from X to Y it is isothermal. Delta U is 0. Z to X, temperature is decreasing. Delta U should be negative. This is not true. Okay. A is again, because work done is taken as 0, that is not true, because there are n moles, and P2 B2 is equal to nR T2, P3 B3, that is equal to nR T3. That means P2 B2 by T2, that is equal to nR, and same is the case with P3 B3 T3. Means P2 B2 by T2, that is equal to P3 B3 by T3, and that is equal to nR. Okay. Now in X to Y, temperature is constant, delta U is 0, and from X to Y, pressure is decreasing. From X to Y, pressure is decreasing. So tell me, when pressure decreases at constant temperature, what about volume?
वॉल्यूम का क्या होगा? हेलो, delta H is equal to delta U plus delta PV, means P2 V2 minus P1 V1. So P2 V2 minus P1 V1. So P2 V2 same P1 V1 upon T1 is also equal to NR. So P1 V1 is NR T1, means delta H is equal to delta U plus volume, means it is an expansion work, becomes T2 minus T1. So T2 is equal to T1. So delta H equal to delta U, and delta U is 0. So delta H is also 0. तो तीन ऑप्शन हमने इनकरेक्ट करा दी. तो obviously we left with one option from Y to Z. अब Y to Z there is a linear increase of temperature with pressure. That means temperature and pressure is directly proportional. हाँ, डेल्टा एच भी 0 होना चाहिए, वही बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने डी भी कट कर दी, है ना. नाउ कम टू ऑप्शन बी. टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है. Y टू Z जा रहे हैं हम. T1 के बराबर है, P2 V2 P1 V1 के बराबर है. ये तो 0 हो गया, तो सही है. बट Y टू Z work done work done is NCV natural log of T2 by T1 प्लस डेल्टा इसका वैल्यू होता है. ये कैसे आया तो फिर nRT2 नेचुरल लॉग ऑफ P2 by P3. वैल्यू कैसे आएगी ये? ये वैल्यू कैसे आएगी?
x to y, y to z. Hmm? T2y y to z गए हम, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, जो आइडिया? y टू z गए T2 से हाँ y to z work done is 0. ये ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो ना, तो ये ऑप्शन होना चाहिए। तो y टू z is a straight line equation और p is proportional to t. T2 actually V3 equal to V2, that means, because it is a straight line equation, so pressure is directly proportional to temperature. So it is, and by straight line, so it is at constant volume. So when volume is constant, work done is 0.
गॉट इट। इसलिए 0 हुआ क्योंकि y to z जो था वो, क्योंकि ये कब आएगा जब देयर इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल केस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कंप्रेशन हो तब आएगा। अब व्हेन देयर इज अ चेंज, वी आर प्लॉटिंग pressure, temperature versus pressure, and there is a straight line equation, that means pressure and temperature are directly proportional, and that should be true at constant volume. That's why work done is 0. Got it? Otherwise it should be curved. If this is answer, it is isothermal reversible process. So it is not isothermal and reversible process. Okay, that's why this B is not true. So if we prove that volume is constant, that means work done is 0. So from temperature pressure plot, this is simply temperature versus pressure and straight line equation. If it is straight line, that means temperature is directly proportional to pressure, means temperature is constant into P. So T upon P is constant. That means T3 upon P3 equal to T2 upon P2. So that means NR, and NR is already constant, so volume should be constant. Then only NRV, because PV equal to NRT. So P upon T, that is equal to NR upon V. So NR upon V, that should be constant. You know, N is already fixed, R is constant, so V should be constant to get this whole thing constant. So in this case, volume is constant. And if volume is constant, work done is 0. Okay. That's why option A is true. We have to prove here that work done in the process 0 only when volume change is 0. Okay. Next question is, for the chemical reaction P moles of X react with Q moles of Y to give R moles of Z, the standard free energy change is denoted by delta G naught. For positive delta G naught, what is the correct statement? Now you know what is delta G naught. The reaction can never proceed in the forward direction irrespective of initial conditions. Reaction will always proceed in the backward direction irrespective of initial conditions. Reaction will proceed in the forward direction if one has a mixture of X, Y and Z of a unit concentration each. And last is, equilibrium constant is less than unity and reaction can proceed in the forward or reverse direction depending on the initial conditions. Okay, now you know delta G naught is equal to minus 2.303 nRT or RT log of Kc. This relation you know, I think. Relation between delta G naught and Kc. And what is the relation with delta G? Because delta G will decide whether the reaction is spontaneous or non-spontaneous. And delta G is equal to delta G naught plus 2.303 nRT. For 1 mole you can take N1 log Qc. This is the relation, and when
QC is equal to Kc, then delta G is 0, then we will get this equation, right? So now, you know, if delta G naught is positive, delta G naught is positive, that means log of Kc is less than 0, means it is negative, because log Kc becomes equal to minus delta G naught upon 2.303 RT. So log Kc is negative, means log Kc is less than 1. So Kc should be less, log Kc is less than 0. So Kc should be less than 1. So first equilibrium constant is less than unity. That's true, because reaction can go forward or reverse direction. That depends upon delta G, and which in turn depends upon QC. And you know what is QC? That is concentration of Z raised to power R divided by concentration of X raised to power P into concentration of Y raised to power Q at any time. And Kc is equal to Z equilibrium raised to power R divided by X equilibrium raised to power P, Y equilibrium raised to power Q. Okay, so initially, what is the concentration of X, Y, and Z? That decide whether the reaction can proceed in backward direction or forward direction. So option D is correct. Because बाकी सब में क्या लिखा है? Reaction can never proceed in the forward direction. Wrong. Reaction will always proceed in backward direction. Wrong. Reaction will proceed in the forward direction if one has a mixture of X, Y, and Z of unit concentration each. But you know, if we have unit concentration each, then delta G equal to delta G naught, and delta G naught is positive, so reaction will proceed in backward direction. That's also not true. Equilibrium constant is less than unity, that's true, and reaction can proceed in forward or backward direction. That depends on the initial conditions. Okay, certain amount, say n moles of a monoatomic ideal gas Cv equal to 3 by 2 R of volume V1, temperature T1, and pressure P1 is expanded against a constant external pressure P2 until the pressure of the gas becomes P2. So what is the correct options? Certain amount, say n moles of a monoatomic ideal gas. So for monoatomic ideal gas, Cv is 3 by 2 R, volume is V1, temperature T1, pressure P1 is expanded against a constant external pressure. That means it is a expansion, means कौन सी expansion? Irreversible expansion. It is an irreversible expansion. Irreversible expansion जो है उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है. अब पहला है, if expansion is carried out adiabatically. Option C. If expansion is carried out isothermally, but it is when it is isothermal and reversible expansion. You know,
because it is against constant external pressure beta. In a reversible, pressure is not constant. If pressure is constant, external pressure is constant, that means we will apply irreversible case. Okay. So now adiabatic process. In adiabatic process, this relation PV gamma equal to constant. Physics, you have done this in physics. PV gamma. Gamma is Cp by Cv, right? Cv is 3 by 2R. So what is Cp? Cp is Cv plus R. 3 by 2 R plus R means 5 by 2 R. So gamma is Cp by Cv. So what is Cp by Cv? 5 by 3. It is 5 by 3. Now see, there is a certain amount of a monoatomic ideal gas. So for monoatomic ideal gas, gamma is 5 by 3. Volume is V1. Temperature is T1 and pressure is P1, and that is expanded against a constant external pressure P2. From P1 it is expanded to is V1 to some volume V2 and against constant external pressure P2 until the pressure of the gas becomes P2. So what is the correct statement? So option A is if expansion is carried out adiabatically. So if expansion is carried out adiabatically, we will apply PV gamma constant. Now, initially pressure was P1, now pressure is P2. Okay, so PV gamma constant. So just differentiate. If we differentiate, it becomes 0. So P differentiation of V, it is gamma into V gamma minus 1 dV plus V gamma into dP, that is equal to 0. So from here, if we look at it, P into gamma into V gamma minus 1 dV plus V into V gamma minus 1 dP, that is equal to 0. So V gamma minus 1 cancel. So it becomes gamma P dV equal to, plus V dP, that is equal to 0. Or in this way, V dP becomes gamma P dV, or P dV equal to V dP upon gamma. Okay, sorry, with the negative sign. Okay, VDP minus gamma PdV
or PdV minus VdP gamma. Now external pressure is P2. Volume is not mentioned. But work done फाइंड आउट करना हो तो क्या फॉर्मूला होता है? P external into dV और सोल्यूशन जो सोल्यूशन हो हमारे पास, अगर कोई भी इरिवर्सिबल वर्क डन की बात कर रहा हूं, for irreversible work done it is minus P external into dV. This is the relation. Now minus P external into dV हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है ना, तो इस फॉर्मूले को, this is the PdV and that is equal to minus V dP by gamma. True, because V2 is not given, dV is we don't have, but dP we have. So minus V, it is P2 minus P1. Or P dV is minus P dV, so it is become plus, right? Because P dV is also equal to minus V dP upon gamma. So minus minus plus, V initial pressure volume, that is V1 P2 minus P1 divided by 5/3. It becomes 3/5 V1 P2 minus P1. Statement 1 is correct. If expansion is carried out adiabatically, entropy change is 0, but it is 0 for reversible expansion. If it is adiabatic and reversible expansion, so you know what is delta S? Q reversible upon T. So for adiabatic, Q reversible is 0, so it is 0. जी हाँ जी भाई साहब करेंगे क्लास आ जाता है छुट्टी बस 5-10 मिनट आइए ये करे चलना ना ले ओके ओके डन तो डेल्टा एस इज 0 किसके लिए? when it is adiabatic and reversible, but it is adiabatic and irreversible expansion, so delta S is always greater than 0. It is not 0. Keep in mind, whenever there is adiabatic and reversible expansion of a gas, then change in entropy is 0. But if it is adiabatic but irreversible, then delta S cannot be 0. Next, if expansion is carried out isothermally. Now, if it is isothermal and reversible expansion, then this value is true. Minus nRT1 natural log of P1 by
P2. But if it is isothermal and reversible, but actually it is isothermal, then it should be irreversible because work is done against a constant external pressure. Whenever external pressure is constant, it is an irreversible work. If expansion is carried out isothermally, entropy change. This is also true, but in which case? Again, isothermal and reversible, because it is delta S equal to delta UQ by T. But if it is isothermal and reversible, delta S is 0, तो वो भी गलत हो जाएगा. Irreversible के लिए भी, reversible के लिए, because Q is 0. नहीं, isothermal, sorry. जो भी W होता है isothermal में, in W is equal to Q plus W is 0, so W is minus Q, or we can say Q is minus W. That's true for reversible, isothermal and reversible expansion, but it is or with plus sign, but it is isothermal and irreversible. This is again not true. So A option is correct. Okay. A certain amount n moles of a monoatomic ideal gas changes from an initial state P1 V1 T1 to a final state P2 V2 T2. Let delta U, delta H and delta S represent the change in internal energy, enthalpy and entropy. So what is correct expression? So first of all, diagram is not given. So we will keep these values, all values different. P1 V1 T1 is not equal to P2 V2 T2 because we don't know what is P1 and what is P2. So we have this expression that P1 is not equal to P2, V1 is not equal to V2, T1 is not equal to T2 because they are different notations. They are using different notations, they are different values because there is no diagram actually. In last case there is a diagram that P and T are varying linearly. So we say that, let us say volume is constant in that case, but here there is no diagram, so we will keep them different. Now let delta U, delta H, delta S, they represent the change in internal energy, enthalpy and entropy respectively. So in this process, what is the correct expression? Okay, so first of all, you know what is delta H? Delta H equal to delta U plus delta PV, because you know H equal to U plus PV. So you know P and V both are different. So delta H equal to delta U plus P2 V2 minus P1 V1. First expression is incorrect. Second expression is also incorrect. Now we left with C and D. Now what is delta S? Delta S is NCV natural log of T2 by T1 plus NR natural log of V2 by V1. This is the relation. So here
in C, delta S is CV natural log of T2 by T1 plus NR natural log of V2 by V1. Only N is not written. That's why this option is not correct. Now we left with the last one. Now you know that what is CV, because it is a monoatomic ideal gas. So what is CV? CV is 3 by 2 R. So that implies that delta S is equal to N 3 by 2 R natural log of T2 by T1 plus NR natural log of V2 by V1. So it means 3 by 2 NR natural log of T2 by T1 plus NR natural log of V2 by V1. So natural log of V2 by V1, natural log of T2 by T1, 3 by 2. Now what is left? P1 V1 T1, P2 V2 T2. You know they are monatomic gas. Initially pressure is P1 V1 T1 and it is an ideal gas. So you know for ideal gas P1 V1 is equal to NR T1 and P2 V2 is equal to NR T2. That implies P1 V1 upon T1 equal to NR. T2 V2 by T2 is also equal to NR. Means P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 by T2 and that is equal to NR. So NR we can replace either by P1 V1 by T1 or P2 V2 by T2. Answer is correct. T. This is NR. This is also NR. So it is 3 by 2 P1 V1 by T1 natural log of T2 by T1 plus P2 V2 by T2 as per the expression. They are equal. P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. So that means option D is correct. Understood? Okay. So इतने क्वेश्चन करते हैं. कल सेम टाइम पे आ सकते हो आप 3:30 around. Okay, so we will continue the thermodynamics questions. Okay. I am good, beta.